Assalamu alaikum class, how are you all? I hope so all of you are fine and enjoying the summer break. Well, it's your geography class. I'm your geography teacher, Miss Nabila. Students, we are going to start the online session of geography, and the work I am going to send you, you have to write it down on a rough copy and I will check it out when you will come back. जब आप वापस आएंगे तो ये काम मैं चेक करूँगी और ये काम दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा। तो आपने क्या करना है, अच्छे बच्चों की तरह साथ साथ समर ब्रेक को एंजॉय करना है और साथ साथ आपने अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू रखना है। ओके स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी the very first chapter of your geography is related to the structure of earth and types of rocks. So today we are going to do a revision of the concepts we have done already in the class. जो कॉन्सेप्ट्स हम ऑलरेडी रॉक्स के बारे में कर चुके हैं, आज मैं आपको वही कॉन्सेप्ट सिर्फ रिवाइज करवाऊंगी। आज वाली वीडियो से रिलेटेड कोई काम भी आपने कॉपी पर नहीं करना, ठीक है जी? ओके, द फर्स्ट थिंग इज रॉक्स. What is rock? As you understand the topic in the class, you have understood it. A natural substance composed of solid crystals of different minerals and make a solid lump. जब बहुत सी मिनरल्स ज़मीन के अंदर या ज़मीन के ऊपर एक ग्रुप की शक्ल में कंबाइन होके इकट्ठी होके एक लंप बना लेती हैं, एक सॉलिड शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हम उसको रॉक्स बोल सकते हैं. ओके, then we have done the types of rocks. There are basically three types of rocks. We have done it. The first one is igneous rock, the second one is sedimentary rock, and the third one is metamorphic rock. I hope so you remember all these things. Okay, what is igneous rock? It's basically a magma. If it is inside the earth, I have told you that when it is inside the earth, it is called magma, and when it comes out of the earth, it is called lava. When it erupts and cools down on the earth's surface, that rock is called igneous rock. जब ये molten matter erupt होता है ज़मीन से बाहर और उसके बाद ज़मीन के ऊपर ये कूल डाउन करता है, ठंडा होता है और फिर जम जाता है, तो वो जो रॉक फॉर्म होती है इसे हम बोलते हैं igneous rock. The second one is sedimentary rock. Sedimentary rocks is basically it is based on the small particles settle in layers and harden over time. We have discussed due to different methods, erosion, floods, you can say the cutting of the wood और different type of जो things होती हैं जिनसे sediments shift करते हैं from one place to another. तो जो रॉक फॉर्म होती हैं उन स्मॉल पार्टिकल्स की वजह से, उन सेडिमेंट्स की वजह से वो जब एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, वी हैव डिस्कस्ड इट इन द क्लास दैट दे सेटल डाउन ऑन द अर्थ इन अ लेयर फॉर्म एंड दैट लेयर क्रिएट सेडिमेंट्री रॉक विच इज द सेकेंड टाइप ऑफ द रॉक. ओके, देन the third one is metamorphic rock. Basically it is a combination. It could be the igneous one or the sedimentary one. Igneous or sedimentary rocks when get heated, जब वो हीटेड होती है या उन पे प्रेशर पड़ता है तो इट ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर टाइप विच इज मेटामॉर्फिक रॉक. ओके जी, देन वी हैव डन रॉक साइकिल. टुडेज लेक्चर इज बेसिकली डिपेंड ऑन द होल रिवीजन ऑफ द टॉपिक्स वी हैव ऑलरेडी डन. इट्स अ रीकैप session video. Okay, rock cycle means it is a process in which the rock change from one type to another. जी, मैंने क्या पॉइंट लिखवाया है कि जो रॉक्स हैं वो हर वक्त चेंजिंग प्रोसेस में रहती हैं. वी हैव सीन इट इन द वीडियो एज वेल. आई हैव शोन यू इन द क्लास दैट इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. ये एक लगातार अमल है जिसमें एक रॉक दूसरी में, दूसरी रॉक तीसरी में, तीसरी रॉक फिर पहली रॉक में चेंज होती रहती है. और ये साइकिल बिल्कुल जिस तरह हमारा लाइफ साइकिल होता है, जिस तरह हमारी फूड चेन होती है, इसी तरह ये रॉक साइकिल भी कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है. और दिस साइकिल कॉन्टीन्यूज रेगुलरली ऑन रेगुलर बेसिस चलता रहता है. Okay, the next topic we have done was about the tectonic plates. We have discussed about the tectonic plates. We have done the activity of that as well in the class. We have discussed, I hope so you remember it, that we have done three types of tectonic plates. Yes, number one is divergent, the second one is convergent, and the third one is transform. Okay, then we have discussed what is the divergent boundary.
It is moving away from each other, in which the plates move away from each other and form a new land within the two parts. It is called divergent. The second one is convergent. Convergent, in that both the sides are moving towards each other. They are applying the force towards each other, and for that reason a new land is formed which is a bit higher from the land. It is called mountain. So another land in the form of mountain or volcanic mountain, it comes on the surface, which is basically the result of convergent boundary plate. The second we have done. The third one is transform. What happened? We have done it slide past each other. When the plates slide past each other, it could move upward or the downward, and it creates earthquakes in the you can say the whole routine. When we feel earthquake, it's basically the result of the transformed tectonic plate boundary result. So here are the lectures I am going to summing up, because we have discussed the whole topics we have already done in the class. As I have told you that this was your recap session. From the next video I will send you the new work, and I have told you that you have to write it down neat and clean with proper date and day, and the margin lines on your copies that will going to be checked by me in your class. And I am telling you that this work will not going to repeat, so you have to take interest in the lecture and you have to understand it. Stay safe. Have a nice day. Thank you.